Hello everyone, welcome to Sports Kabri and Curious Harry. For a change, Hiren, we're early today, 2 minutes early. That's because the ISL match between Punjab and Blasters has given us that time to come early and sort of they've wrapped it up on time, I guess. And there was a Kerala Blasters who came away with a 1-0 victory. Penalty decision that we can debate and we can discuss. And of course, Diamantakos put it away with his left foot quite nicely in the end. They had the chances. The Blasters hit the post a few times in this game. Um, I felt like Punjab had the opportunity to sort of equalize towards the end. They're putting on some nice pressure. Wilmar Jordan, after he came in and then sort of started giving them the Blasters defense a hard time. Adrian Luna wasn't there, but still the traveling fans had something to cheer about. So interesting game. When you look at it from the Kerala Blasters point of view, Hiren, good win for them away from home. I think definitely this is the perfect result they are looking for, particularly away में, and crucial win I would say for their you can say कि sealed की जो रेस चल रही है उसमें इस तरह के विन आई थिंक काफी ज्यादा मैटर करने वाले हैं. एंड विथआउट एड्रियन लूना देयर मेन प्लेयर आई थिंक जिस तरह की आज परफॉर्मेंस दिखाई है केरला ब्लास्टर ने, पर्टिकुलरली कुछ प्लेयर ने आई थिंक मोहम्मद ब्रदर्स एमान एंड अजहर आई थिंक फॉर मी दोस टू आर द मैन ऑफ द मैच टू बी ऑनेस्ट. एंड विबिन मोहना आई थिंक अगर आप देखिए पूरी मिडफील्ड इंडियन मिडफील्ड खेल रही थी उनकी एंड उसके बावजूद जिस तरह से आप देखिए परफॉर्मेंस आई आई थिंक हेड्स ऑफ टू देम, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. एंड पेनल्टी भी हम सबको पता है मोहम्मद एमान ने जिस तरह से विन की आई थिंक फॉर मी दैट वाज अ पेनल्टी बिकॉज द डिफेंडर इज caught up with the leg of Mohammad Eman, so that was a pen. And I think a brilliant performance. I think defensively आप देखें both the foreigners Leskovic and मिलोन स्क्रीनसिक, जैसे आपने बोला कि लास्ट में कुछ ऐसे चांसेस बने थे विल्मार जॉर्डन के द्वारा जो जिसमें काफी क्रूशियल ब्लॉक दोनों ही लेस्कोविच का एक ब्लॉक आया, एक ग्रीनसिक का ब्लॉक आया. सो दे दोस टू आल्सो लुक्स रियली रियली गुड. एंड आप देखिए टाइटल रेस में आप सेकंड पोजीशन पे वो जरूर बने हुए हैं लेकिन सेम पॉइंट हो चुके हैं विद द एफसी गोवा. सो श्रीमान रणवीर भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं. हेलो ब्रो, हाउ आर यू? भाई कैसे हो भाई? हाउ इज द थिंग इन बेल्जियम ब्रो? एंड आई थिंक दैट वाज अ रियली रियली क्रूशियल, नो डाउट. 2 मैचेस ज्यादा यहाँ पे क्या बोलते कि केरला ब्लास्टर ने खेले हैं लेकिन आई थिंक एक प्रेशर बना रहेगा एफसी गोवा के ऊपर या फिर जो थर्ड पोजीशन पे मोहन बगान है, फोर्थ पे मुंबई सिटी है कि केरला ब्लास्टर इज लर्किंग अराउंड दैट टॉप थ्री फोर पोजीशन. एंड दिस इज अ ब्रिलियंट विन. विबिन की फ्री किक बेस्ट बिल्कुल भाई, जिस तरह से ब्रिलियंट फ्री किक फ्रॉम विबिन मोहन. एंड उसके बाद लेस्कोविच का हेडर भी पोस्ट पे लगा, फर्स्ट हाफ में भी एक बॉल पोस्ट पे लगा. सो आई थिंक it's a quite impressive. Without Luna, they are giving this type of performance. I think this is a brilliant performance from them. Yeah, Punjab did not deserve to lose. Do you agree, Hiren? Because they gave a good I account, think but Blasters deserve had to. more I chances. would say that Blaster has more chances and Punjab had their moments, but they are unable to finish him. And I think मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो मिडफील्ड में को उनका मेरे को लगता है कि वो मिसिंग पजल है कि जहाँ पे एक फॉरेनर्स की जरूरत है उसको. टू बी ऑनेस्ट आई थिंक दे आर टू मच इनएक्सपीरियंस इन दी मिडफील्ड एंड उसके चलते कई बार आपको बैकलाइन भी काफी इजीली आप देखिए पंजाब एफसी की बैकलाइन खुल रही थी. सो आई थिंक for me I think that needs to be sorted out because अब अगर आप किरण कुमार लिंबू को अगर गोलकीपर खिला रहे हो then that one player is missing on the midfield and वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हर्ट कर रहा है. शिवान भाई बोल रहे कि all good bro, playing to national team division in the Belgium, coming to India sooner than you think. अरे भाई क्या अपडेट है भाई ब्रो? what is the update? Anything happen? चलो मैं बाद में बात करता हूँ श्रीमान. आई थिंक वी विल टॉक बैक स्टेज, नो डाउट अबाउट दैट. मैं आपसे राहुल जानना चाहता हूँ, काफी सारे लोग बोल रहे हैं प्रीतम कोटाल का राइट बैक पे आई थिंक कंप्लीटली हॉरिफाइड परफॉर्मेंस फ्रॉम द प्रीतम कोटाल टू बी ऑनेस्ट. मतलब अगर इंडियन विंगर्स के सामने अगर आप देखिए आप इस तरह से बीट हो रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया एंड उज्बेकिस्तान या फिर उससे एक्सपेक्ट भी करना कि प्रीतम कोटाल को राइट बैक खिलाना, आई थिंक दैट वुड बी क्या बोलते कि deathful decision to be honest because I think he looks terrible today. एक चांस भी उसको मिला था. That should be finished. That chance should be finished. If you are a right back and you got a chance like that one on one, you should be finishing that. And he looks really really poor to be honest. What's your Yeah, opinion? I don't think he's going to start anyways. Of course, he's not. It's going to be Nikhil Pujari. He's going to start on the right hand side, and it looks like central defense. You'll probably have Jingana and Rahul Beke. It looks like it's going to be like that. I don't बट think वो he's going to बैकअप start. में भी राहुल नहीं बैकअप भले ही स्टार्ट नहीं करे लेकिन अगर स्क्वाड में है तो कहीं ना कहीं एज बैकअप पे कहीं ना कहीं एज सब्स्टिट्यूशन भी तो वो यूज होगा True, ना. दैट इज द true, true, कंसर्न. true. I mean, see, if you ask me,
I would still not go with Pritham Kota. I'll probably go with Roshan, who will give you that extra. Hmm. He'll play as a right back if you need him to play up forward. He'll play him up forward. But I think this coach is going to go with Pritham Kota. It's just my feeling about what Igor Stimac is going to do. If it was up to me, I would go with Roshan. So yeah, रोशन है, राहुल बेके है आपके पास. Rahul Beke is already there. You have Roshan who can play at right back. If you want to play him further forward, you can do that. You आशीष can add राय, आशीष राय है. Ashish Rai is also there. So you have a lot of options. Even Vineet saying Ashish Rai is an option. Yeah, the Eman brothers were on fire, and one of them winning the penalty looks. Yeah, again, I agree with you, Hiren. In the end, I think it did look like a penalty. The defender's wrong side. So yeah, एग्जैक्टली, हाँ, दैट्स द सीन. अगर यहाँ पे थोड़ा सा वो क्या बोलते वो होता तो फिर भी आई थिंक बच जाते हो, लेकिन दैट वाज अ रियली डिफिकल्ट, एंड आई थिंक रेफरी ने भी क्लियर कट वहाँ पे देख लिया था, तो दैट्स व्हाई इट्स हैज बीन गिवन. मैं एक एक चीज से एक आपसे जानना चाहता हूँ राहुल की, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पंजाब एफसी, जो अभी तक वो यहाँ पे एक विन भी हासिल नहीं कर पाए, और आपको क्या लगता है कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर मिसिंग इन द टीम? it looks like they're missing Indian quality. It looks like it because I think Luka Marcin is a good striker on his day. So is Mehdi Dalal is can produce magic on his day. So it's not the foreign base. I think it's the Indian sort of contingent that they're missing again today. Nikhil Prabhu, rash decision. You want somebody who is cool, who he didn't have to challenge. The winger's going down the चैलेंज, line. He has हाँ, एग्जैक्टली. nowhere to go. कहाँ जाएगा? He can't go anywhere. So हाँ. yeah, foreign keeper, I think that's another thing. We've discussed this. Not needed. Use your foreign qualities. You could have played Wilmar Jordan, for example, somebody like him, another attacking threat. You can play two strikers, 4-4-2, play direct. आई थिंक एक एक चीज राहुल, आप अब देखिए कि विल्मर जॉर्डन तो आज इंजरी के बाद आ रहा था, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में वो रस्टी दिखा. उसके बाद देखिए जो शार्पनेस उस बंदे में, नहीं कंप्लीटली एग्री कि लुका मॉर्जिनसन एंड विल्मर जॉर्डन इन फ्रंट, एंड बिहाइंड Exactly. देम जोन मेरा एंड मेडी तला. आई थिंक दिस Yeah. फ्रंट फोर विल क्रिएट अ हेवोक फॉर एनी टीम. और यू कैन से कि चेसियास को अगर सेंटर पे खिलाते हो तो मेडी तला या फिर जोन मेरा में से भी किसी एक को आप खिला सकते हो, एंड आई थिंक दैट वुड बी अ परफेक्ट स्टार्टिंग 11 फॉर Punjab FC. And I think they should be going for a goalkeeper in January transfer window, because there are a lot of young goalkeepers who are doing great in ISL, Exactly. and I think they should be, I think बैकअप के तौर पे भी आप देखिए काफी है. अगर आप एफसी गोवा में देखें तो भी You धीरज can go सिंह to बेंच पे Dheeraj. बैठे हुए हैं. Yeah, हाँ, exactly. एग्जैक्टली, आपके पास देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन. ऋतिक तिवारी है, ही इज आल्सो वन ऑफ द प्रोमिसिंग गोलकीपर. सो देयर आर मल्टीपल कीपर्स जो यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं. सो आई थिंक रवि कुमार, आई थिंक आई डोंट थिंक सो यूगोस्लाविक इंजर्ड है. आई थिंक ये टेक्निकल डिसीजन ही मेरे हिसाब से है कि किरण कुमार लेबू को नॉट ओनली एज अ गोलकीपर बट एक लीडर के तौर पे भी वो खिलाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन आई थिंक दे शुड मूव ऑन फ्रॉम दैट थिंग, एंड दे शुड ब्रिंग यू कैन सी इंडियन कीपर, यंग कीपर, जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट भी करें तो आगे आने वाले टाइम में आपको भी वो भी हो पाए. Yeah, Chetan and Visionary Kannada asking about BSC's new coach. We'll speak about it. Gerard Zaragoza has taken over, but we'll speak about him right after we discuss this game. In terms of the Blasters now, Kiran, because of course, for me, it felt like they had something lesser than sort of Goa and Mumbai, Mohan Bagan. I thought they were just one step ahead, but it really looks like the Blasters now are in the mix. 10 games, 20 points. They played two more than Goa, they played four more than Mohan Bagan, but still they're in the mix. Is this are you happy with their first 10 games? 20 points is a good tally. आई थिंक जो एक चीज मेरे को इस सीजन कंपेयर टू लास्ट सीजन जो अच्छी दिखी है केरला ब्लास्टर के साथ, I completely agree with your point also, but I think the character and mentality is there. If you see the celebration from Yaman or the team, how they are reacting each moment, I think that shows कि they are going for this season without thinking too much about, because आप अब देखिए इस सीजन इतना भी इजी नहीं रहा है उनके. काफी जो बैकलाइन के मतलब दोनों फॉरेनर्स, हम सबको पता है कि एक लेस्कोविच इंजर्ड था, आपका क्या बोलते हैं ग्रीनसिक सस्पेंड हो गया था, आपका राइट बैक प्रबीर दास सस्पेंड हो गया था. उसके बाद भी जिस तरह से आप देखिए उन्होंने परफॉर्मेंस प्रोड्यूस की, दैट शोज अ टीम्स मेंटालिटी, एंड टीम्स क्या बोलते हैं कि इस सीजन की जो उनके हंगरनेस है कि इस बार कैसे भी करके हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, नो मैटर व्हाट, कोई भी इंजर हो जाए. एंड आज एड्रियन लूना के मतलब किसी ने आई डोंट थिंक सो कि एक्सपेक्ट किया होगा कि इतना अवे में, पर्टिकुलरली आई थिंक एक साल के बाद उनका अवे में क्लीन शीट रहा है. सो आई थिंक वो देख के मेरे को बढ़िया लग रहा है कि रादर देन थिंकिंग अबाउट कि ये प्लेयर नहीं है, ये प्लेयर नहीं है, और उसके बावजूद भी आप देखिए जो भी प्लेयर आ रहा है स्टेप अप कर रहा है.
And I think that's the positive sign for क्या बोलते हैं कि Ivan Vukovic and Kerala Blaster. And I think if they continue this momentum, no doubt I think FC Goa या फिर मुंबई सिटी या फिर मोहन बगान से कंपेयर करेंगे तो आपको उतना ज्यादा नहीं लगेगा कि भी बेंच से भी उतना ज्यादा बढ़िया प्लेयर आ रहा है या फिर उस तरह की आपको एक सॉलिड टीम दिखेगी. लेकिन आई थिंक जिस तरह से एज ए टीम परफॉर्मेंस आ रही है आई थिंक दैट इज अ प्रॉमिसिंग साइन फॉर केरला ब्लास्टर की इसके बलबूते पे आप किसी भी तरह के मैच को निकाल सकते हैं. कई बार उन्होंने कमबैक भी किया है. हमने 2-3 मैच ऐसे देखे कि जहाँ पे वो 1-0 2-0 डाउन थे वहां से उन्होंने कमबैक किया है. सो आई थिंक दैट इज द पॉजिटिव थिंग. Yeah, और एक Parmeshwar चीज आई Singh. थिंक जो सबसे बड़ा उनके पास Yeah, प्लस पॉइंट है जो किसी भी क्लब के पास नहीं है वो है उनका फैन बेस. आई थिंक अवे में जिस तरह से भाई आज फैन थे आई डोंट थिंक crazy. सो कि एनी क्लब हैज given that type of support till now मेरे हिसाब से. And that is the biggest plus point for them for their motivation. No, I mean, I completely agree. Parmeshwar Singh, Punjab should get Dheeraj on loan. That's a possibility that we can That's a good explore. thing. Yeah, एग्जैक्टली. I can. वाई टू फॉरेनर्स भाई ये पूछ रहे तो इसलिए भाई क्योंकि हॉर्मिपा इंजर्ड था आपका. सो यू डोंट हैव एनी चॉइस सो यू हैव टू गो विथ टू फॉरेनर्स. Punjab, I've seen need to remove the Nepali goalkeeper because again, foreign spot being occupied. Discuss this. Probably we'll see that change from next game onwards. Yeah. Another important sort of discussion we need to have is around Punjab FC. Where do they go from here, Hiren? Because it's I think struggles. They're just 1 point ahead of Hyderabad. But yeah, नहीं आई थिंक एक चीज उनके लिए जो अच्छी है कि अभी रेलिगेशन नहीं है इसमें. उतना ज्यादा आपको क्या बोलते हैं कि रिएक्ट करने की जरूरत नहीं. एंड जो उनके ओनर्स और जो क्लब का भी विजन दिखा है इस सीजन जब बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द सीजन जो उन्होंने बताया था स्टेटमेंट में उन्होंने वही बोला कि इस सीजन को मैं क्या बोलते हैं कि एक सेटल डाउन होने के लिए जो सीजन है उस तरह से देख रहे हैं रादर देन थिंकिंग टू मच अबाउट कि हमें टॉप 6 में जाना है और उस तरह से. तो आई थिंक वो आई लीग से आईएसएल में आना आई थिंक काफी सारे जो प्लेयर है उनके लिए वो एक बड़ा स्टेप अप होता है. और हम सबको पता है कि जो वो इंटेंसिटी और जो मैचेस का वो है वो भी काफी ज्यादा डिफरेंस होता है. वो प्लेयर भी खुद फील करते हैं और हमने काफी यंगस्टर के साथ भी ये देखा है. सो आई थिंक ये सीजन उनके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सीजन है ट्रांजिशन सीजन है आई वुड से. एंड यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एरिया की जहाँ पे हमें ट्रांसफर की जरूरत है. इसीलिए आप देखिए इस सीजन उन्होंने ऐसा नहीं है कि आईएसएल में आ गए तो बड़ा खर्चा कर देना. इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा मेरे को लगता है कि जो ट्रांसफर विंडो भी समर ट्रांसफर विंडो गई उसमें थोड़ा सा संभल के उन्होंने कुछ ऐसी साइनिंग की है इतना ज्यादा बड़े स्पेंड के लिए नहीं गए. And they wait for their moment. तो I think January winter transfer window, next summer transfer window में और भी ज्यादा I think जो इंडियन प्लेयर भी कुछ मिसिंग लग रहे हैं वो भी I think वो लाने की कोशिश करेंगे. And then we see Punjab FC in second season I would say much better. okay. Lone Good Singh was impressed with Prashant. Came the end towards the end, showed some sort of speed, acceleration, and put a few decent crosses. Fair enough to him today. Again, Parmeshwar on Gerard Zaragoza. We'll discuss Gerard Zaragoza again. KBFC scouting is top notch, says Rawal Raj. Fair enough. I mean, at least the youngsters who they are playing right now are pretty good. Punjab FC will finish bottom third. You think, Hire? Bottom third? I think bottom 3 में ही मैं देख रहा हूँ पंजाब एफसी को अभी तो. I think जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं they will finish in the bottom 3. Okay, interesting. I mean, do you think they'll finish sort of 9th? Not. I feel like 12th or 11th is more likely for them. I think 10th or 11th मैं भी वही देख रहा हूँ उसी के अराउंड देख रहा हूँ. Enjoy line. It was Punjab who lost today. It was 1-0 to the Blasters, away win. Yeah. Prashant bullied Kotla a few times. In the end, I think he left him on the floor as well. So, not a great sign for the experienced. एक राहुल मैं एक तुम्हारे जो क्या बोलते हैं नेमेसिस है राहुल केपी के परफॉर्मेंस से भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ क्योंकि आई थिंक जिस तरह से उनको चांसेस दिए गए हैं एंड एक टीम में उनको एक लीडरशिप लेनी पड़ेगी जब एड्रियन डूना जैसा प्लेयर नहीं है मिडफील्ड में. ही शुड बी टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आज उसने मेरे को डिसअपॉइंट किया विथ हिज परफॉर्मेंस. आई थिंक ही नीड्स टू स्टेप अप. अदरवाइज आई थिंक मे बी जो समर ट्रांसफर विंडो में न्यूज आ रही थी कि राहुल केपी को सेल करने के लिए देख रहे हैं मे बी केरला ब्लास्टर आई थिंक नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो में आई थिंक वो रियलिटी होती हुई भी दिखे क्योंकि उतना इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस वो नहीं दे पा रहे हैं नेशनल टीम के लिए. नो डाउट जैसा भी परफॉर्मेंस हो लेकिन आई थिंक केरला ब्लास्टर के लिए उतना इम्पैक्ट ग्लिम्पसिप दिखाते हैं. ग्लिम्पसिप आप उसको कोई भी आप चाहे वो पूरा मैच खेले या फिर एज ए सब्स्टिट्यूशन भी आए वो दिखता है लेकिन वो जो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए
वो आई थिंक कहीं ना कहीं अभी भी राहुल केपी से मिसिंग लग रही है. सो व्हाट्स योर Yeah. ओपिनियन अबाउट? No, I agree. I think the problem with Rahul KP has been that consistency. I don't think he's going to make it to the Asian Cup squad, at least for me, on that right hand side. And yeah, it just feels like you need wingers who are consistent. Unfortunately for Rahul KP, you've got Mahesh Changte who do it more consistently, and that's why they're going to make it, and you're probably not. But yeah, I mean, he's got the raw talent, which is that pace. He's got that burst of pace. He's got a good shot on him. Let's just see him do it more consistently. Bad game, but a win is a win, says Dark Knight for the Blasters. That's true. Away from home, all you need is 3 points, and they've done it. And I I don't think don't it's a think bad so. game. They were, Yeah, exactly. I don't think so. They have a really bad game. I think they created a more chances. They dominated the game, and they yeah. have a clear cut chances. 3-4 times post ईस्ट It's करना. supposed to feel आपकी times, yeah. मिडफील्ड ने अच्छा परफॉर्मेंस, डिफेंस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया. फ्रंट लाइन में भी मैं पेपरे से भी आज थोड़ा सा, मैं आई थिंक जिस तरह से उसको चांस बन सकते थे, आई थिंक उसने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे को लगा कि ही कुड हैव डन बेटर. Also, quick word on Saurav's challenge on Luka Marcin. What do you think about that? The That way was Luka a Marcin nasty got challenge. up and came, it looked like But something was wrong. that could be a serious, क्या बोलते, serious injury type of a tackle. Yeah, हो exactly, सकता था. exactly. Completely missed the didn't go for the ball at all. Completely. But yeah. Yeah, but again, just got the job done. सेरिन भाई का point अच्छा है Right कि side. right side was bad for the KBFC. Agree. I think they not producing much. Yeah. Again, Pepra, what is it that keeps sort of getting him into the team, Hiren? What is it? Physicality and pace, दो. Physicality and pace. आई थिंक Yeah. जिस तरह से आपने देखा एक मोमेंट आया था मैच में कि जहाँ पे उसने वो बीट करके आगे चले गए थे, उसके बाद फिर वो जो दो दो बंदों ने उससे पीछे से क्या बोलते कि रन कवर कर लिया, तब जाके उसका डिसीजन मेकिंग वो हो गया. सो ही इज कैपेबल टू डू दैट टाइप ऑफ थिंग्स कि जहाँ पे वो मतलब इन बिहाइंड रन निकालेगा या फिर उस तरह से वन में वो बीट कर देगा. लेकिन उसके बाद जो फाइनल थर्ड में है, आई थिंक वो ही लुक्स मोर, यू कैन से कि एवरेज टू मी. Do you think Sakai should be preferred ahead of him? It's a shout. I think I think Saka is having a good season. I think अच्छा खेला है वो. So why not? Yeah, yeah. Okay, interesting. Yeah, it looks like very interesting things are happening. Adrian Luna, let's quickly touch upon him. Huge presence for Kerala Blasters. Not injured. I mean, news just came out after Vukomanovic's suspension. This came out. Then it's a lot of mixed feelings. What do you think? How do you think they're going to deal with it? I think that is a big loss without a doubt. Heart and soul of the KBFC. Adrian Luna, the performance, the work rate, the leadership, everything. You name it, and he has for the Kerala Blaster. So big loss for Kerala Blaster without a doubt. Other players has to step up. I think a positive sign is Mohammad Eman Azhar brothers are stepping up. Ibn Mona looking good. Danish Farooq looking good. So that's a good sign. Daisuke Saka is in midfield. So there are a couple of options in the midfield. They need to step up in absence of Luna. Definitely, there is no, you can say, perfect replacement for him. But I think January transfer window is coming up. So I think Kerala Blaster has to look for that option कि at least आप उसका 60, 70, 80% वाला भी प्लेयर ले आए. एंड आई थिंक दैट विल बी रियली इम्पोर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज इफ यू गोइंग फॉर द शील्ड देन आपको जरूरत भी है एक ऐसे बैकअप की जो यहाँ पे इस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पे डिलीवर कर पाए. सो लेट्स सी जनवरी ट्रांसफर विंडो में क्या वो उसका रिप्लेसमेंट लाते हैं कि नहीं ला पाते. किसी ने अभी यहाँ पे बोला कि क्या दीपक टांगरी इज बेटर देन विपिन मोहन. करंटली तो भाई नहीं, करंटली जिस No तरह chance. से विपिन मोहन खेल रहा Not है, right. नो चांस. Yeah. And again, praise for Wilmar Jordan. Looked good when he came on today for Punjab. But yeah, okay. आई थिंक Yeah. विल्मार जॉर्डन हैज ए, मतलब लास्ट सीजन भी आप देखे नॉर्थ ईस्ट के लिए, अगर हीरो सुपर कप में देखे, ही इज बीन ब्रिलियंट. एंड दैट्स व्हाई सेमीफाइनल भी खेला था नॉर्थ ईस्ट. सो आई थिंक अगर वो इंजरी नहीं होता है, ऐसे ही कंटिन्यू खेला, देन आई थिंक पंजाब एफसी के लिए ही कैन बी स्कोर मोर गोल्स. Yeah, Eman also could be his breakout season. Will help him if he does break out there and consistently perform throughout the course of this campaign. Okay, Hiren, interesting news coming out of Bengaluru. Of course, Gerard Zaragoza back to BFC. For everyone here, just want to remind you that Zaragoza was at BFC from 2018 to 2019. He was there for that ISL winning season. So anybody who are probably want to see his credentials. He was a part of that ISL winning campaign. BSC finished on top of the group, top of the ISL that year as well.
So good signs that way. But Hiren, what is Zaragoza going to bring to BSC? I think first of all, so he knows club very well inside out because he is at the BFC earlier. Dusra, I think he knows ISL also. That's also good sign. And I think Spaniard we have seen that most of the Spaniard coaches I think has been successful at the in the Indian football. So I think tactically I think he is a very sound manager and he has experience also in the you can say ki SN football. I think he in Gulf he has managed one or two clubs also. So I think उस हिसाब से देखे तो I think उतना ज्यादा उसको सेटल डाउन होने में दिक्कत नहीं आएगी कि भाई पहले तो सेटल डाउन होना है सारी चीजें एंड कुछ प्लेयरों को डेफिनेटली जानता भी है उस टाइम पे जो थे तो आई थिंक इंटरेस्टिंग प्रोफाइल लाया है आई थिंक जो प्लेइंग स्टाइल भी उसकी है he likes to without the ball 4-2-3-1 4-1 forward hit the ball 4-2-3-1 build up so I think इंटरेस्टिंग फुटबॉल आई थिंक एटलीस्ट थोड़ा सा वो पासिंग वाला फुटबॉल जो आई थिंक बीएफसी और तुम भी मतलब काफी बार बोल चुके हो कि वो जो एक आई प्लीजिंग फुटबॉल है वो मतलब अंडर दी क्या बोलते कि सैमन Yeah, ग्रेसन नहीं देखने को मिल रहा था वो आई थिंक शायद हमें क्या बोलते कि एक्सपेक्ट कर सकते कि जेरार्ड जरगोजा के अंदर हमें देखने को मिले सो आई थिंक let's बिग hope. चैलेंज फॉर हिम दिस सीजन वुड बी अ ट्रांजिशन season I think Yeah, for BFC now because there are a couple of things he also like to change. So January transfer window will be interesting if for BFC going for any for an all Indian player signings. yeah, it's going to be interesting. Igor Simak saying Gerard plays 3-5-2 just another Grayson. We're going to see. We're going to find out what he does as head coach. Um, BFC need a centre back, right back, and Indian wingers. Fair enough. I agree. I think right back. I want to see Robin Yadav play the entire season at right back because I like what I'm seeing from him in patches. So I want to give him that sort of time, and it's a nice season for him to have because BFC is not doing that well. Probably the right time for giving youngsters a chance. If you get somebody who's of a higher profile, you won't Exactly. get that chance. So Mm. he's doing well and he's doing pretty decently as well. So fair enough to him. They've inherited a lot of the problems of last season, which I agree. I think this has sort of been the issue. Um, yeah, Hiren, Do, what do you do, have to say? do you see मंदार थामाने जो चला गया उसके बाद भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्लब के ऊपर आया है जब मैनेजमेंट पार्ट में और Yeah, I asked Arun about this as well because I was thinking like the same thing I was thinking. I was has something changed about the philosophy or what did everything sort of suddenly change because after 2021 it sort of felt like they've brought in new players every year. There are too many changes that are happening around the squad. And again, this year you brought in Curtis Main, you brought in Kezia Windop, you brought in Damjanovic, three new foreigners, you brought in Ryan Williams, four new foreigners, and so many Indian players, Halichar Nazri, Rohit Danu. So it's just too many changes for me. I want to see a settled team, and I think that's the sort of missing link. We need to settle. If you're going with this plan, if Simon Grayson had stuck to playing how he was playing last year, I would have been very happy. And I wouldn't have been happy, but I've been like, okay, this guy has a plan. He's sticking to it. He tried to do something this year that is not his game. He tried, oh, let's play the beautiful football. It didn't happen for him because he's not that kind of manager. So I wish he just stuck to what he was good at, which was counter-attacking football. Keep your defense tight, and sort of didn't happen, unfortunately. But yeah, it's okay. I think we just have to move on, and hopefully the January transfer window will help Zaragoza bring in his players and start building something for BFC, and we can see that for the next few years. Hopes for BFC here in this season after the coach change. I think मैंने बोला कि this is the perfect time for a transition season where you give a couple of youngsters a chance and see if they are capable to you can say कि for ISL level and दूसरा I think देखते हैं किस तरह से अभी देखिए बाउंस बैक तो कर सकते हैं I think वो सिक्स पोजीशन के लिए अभी भी वो देख सकते हैं लेकिन I think the more important thing would be the settle down of the manager and किस तरह से प्लेयर रिएक्ट करते हैं जो सबसे बड़ा कंसर्न मेरे को लगता है rather than performance I think द डिजायर एंड हंगरनेस जो आई थिंक साइमन ग्रेसन ने भी जाते हुए बोला कि प्लेयरों में वो नहीं दिख रहा है वो सच में मेरे को भी मतलब मैंने उससे पहले भी बताया था कि I प्लेयर agree. आर नॉट लुकिंग दैट दैट यू कैन से कि वो मतलब एक बैच के लिए आप खेल रहे हो आई थिंक फैंस आर सपोर्टिंग मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बट आई थिंक द प्लेयर की ओर से वो जो कमिटमेंट और वो सारी चीजें दिखनी चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है तो लेट्स सी वो किस तरह से यहाँ पे एक हंगरनेस है वो प्लेयरों में आती है Yeah, I think I agree as well. I think even the players are.
it just sort of doesn't look like it's happening even from the players side. Promoting academy players has made an impact for BSC. I agree. I like to see what Shiva Shakti looks. He looked good to me against when he played Chennai. Shiva finally sort of having that freedom, driving at defenders, taking them on. It was nice to see that from him. आई थिंक ही नीड्स ए मोर गेम टाइम एंड विनीत सिंह भाई आपके तो काफी सारे प्रिडिक्शन दिए थे कि भाई 3-0 से केरला जीतेगी भाई 1-0 से ही जीती है सो योर प्रिडिक्शन हैज बीन गॉन रॉन्ग ब्रो आशु भाई बोल रहे कि आई फील डू यू एग्री राहुल आई थिंक दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डू यू सी कि आपको इस सीजन के एंड के बाद सुनील छेत्री को सेल कर देना चाहिए व्हाट्स These योर are ओपिनियन always is always a tough question. I think. See, yesterday he had an opportunity to square it to, I think it was Moni was coming in, a simple tap in, but he chose not to and took the shot on his left foot from a tight angle. I think Sunil feels like the weight of the club is on him, and he needs to do something. He needs to do something every game. But I think that's where things have to change. I think he has to sort of realize that it's fine. Let's just let everyone get into I think Sunil Chetri's quality, you need to have him because on his day, his quality, the link up, the finishing, but, nobody but, else but, has but that in BFC. I don't even think Curtis Main has that in BFC. He's the best striker we have. So I think it's just do you see नहीं do you see him as a last season's role or this season कि last season में as a substitution वाला जो role था या फिर no, no. I didn't agree with it then, and I don't agree with it even now. I don't think Sunil Chetri starts on okay the bench. He has to start in the 11. It's just he's got to bring everyone together. Sunil can get frustrated at people at times in the game, which is understandable given the heat and all that. But I think he just has to relax, bring everyone together because he's the leader, and the youngsters will look up to him. And it's not going to help them if he's shouting at them, right? So I want him to. I hmm. feel like he should just relax. But it's okay. I mean, he knows better than most of us. So yeah, I still want Sunil Chetri to perform consistently for this team. So yeah. ये विलियम्स इंजरी अपडेट्स यानी कि समझ में नहीं आया Ryan Williams has been injured for the अच्छा रैन last विलियम्स ओके three हाँ games. उसको Yeah, हैमस्ट्रिंग इंजरी है ना yeah. It looks bad because I don't know. I don't know much about it, but it's sad because I think Ryan Williams was our best player until he got injured. So yeah, it's just not going right for BSC at the moment, I guess. Um, yeah, quickly a couple of national team questions. Jackson will be out from injury. I mean, it's also for the Blasters and for the national team. Good. Hiren, do you think he's going to be back? No. What Igor Simic said is slightest chances he can be Yeah. ready for the SM. So there is a still doubt or suspense regarding his availability and वो तो टाइम ही और उसका जो रिकवरी सेशन है ट्रेनिंग है किस तरह से वो फील करता है वैसे उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा सो डिफिकल्ट तो है एंड उदय भाई के जो कमेंट है कि सुब्रतो भट्टाचार्य कमेंटेड ऑन आईएसएल फॉरेनर्स इसके बारे में आई थिंक मैंने आज जो 5 बजे भी लाइव किया तो उसमें भी बता रहा हूँ सुनील सर फॉर्मर कोच उन्होंने बोला है कि आईएसएल के जो फॉरेनर्स की क्वालिटी है वो उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है आई काइंड ऑफ एग्री विथ हिज स्टेटमेंट बिकॉज देयर आर ए कपल ऑफ प्लेयर्स हु आर ओनली गुड फॉरेनर्स की भी बात करें बाकी काफी सारे ऐसे प्लेयर आते हैं कि जो एवरेज होते हैं एंड उन्होंने वहां पे बोला कि दिस इज ड्यू टू द एजेंट्स माफिया व्हाट डू यू थिंक राहुल कि जिस तरह से क्लब्स एजेंट के ऊपर रिलाई करते हैं और जिस तरह से एजेंट लोगों का हम सबको पता है कि टीम सिलेक्शन में एंड एवरीवेयर दे आर मतलब हमने देखा है कि एक लीग से काफी सारे प्लेयर को बार बार आना मतलब ये लीग से हमने देखा है कि ज्यादातर प्लेयर आप एशियन प्लेयर है तो वहां से ही आते हुए हमें दिखते हैं इस बार कुछ यहाँ पे हमें बाकी कंट्रीज के भी प्लेयर देखे दैट्स अ गुड साइन बिकॉज आपको भी पता है कि जिस प्राइस पे फॉरेन प्लेयर आ रहे हैं उस प्राइस पे अगर आप बेटर स्काउटिंग से लाओगे तो आपको बेटर प्लेयर मिल सकते हैं व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट I think I partially agree in the sense that, see, like at my club itself, if you take BFC for example, Kessia not fit, Curtis Main not good enough. Ryan Williams is probably the only foreigner we've brought in who's of quality from outside. See, Damjanovic obviously was in आई the थिंक ISL, right? Damjanovic was in ISL but I think he is also performing really average this year Yeah, exactly. So if you look at, for me, I feel like the foreigners who have actually impacted and impressed, Nestor Albiash from Northeast, that's quality. I think Northeast that is a quality Milos forward. Trinsic Yeah, Milos Drinchik. Trinsic KBFC Yeah. KBFC So, 100% agree but I think there are only few you can pick and choose, right? Like it's hard. Hmm. I think Stevanovic from Jamshedpur is also Yeah, really poor. Stevanovic. I think जिस तरह से जिस एक्सपेक्टेशन मतलब इंटर मिलान से वो ट्रेबल स्कोरिंग विनिंग का हिस्सा और उसके बाद भी परफॉर्मेंस ना आना
And I think Elsinho from Jamshedpur is a really good quality player. Yeah, there are a few. I think it's just, yeah. I mean, there are of course also a lot who are not doing that well, I guess, and it's a mixed one. Um, Again, I just saw a comment, interesting one from Harry Maguire. Chedri links up better with the team, which I agree. I think this is something even I've always thought about. Play him as a second striker, just behind the striker, he'll do very well because he links up well. His touch is brilliant. His passing ability is also great, and he can shoot from anywhere. So it's a possibility. I hope they explore in the future. Tachikawa from JFC is So, good. Yes, Tachikawa is good. yeah. So there are a few. Hmm. Manzoro. You like Manzoro? मंजूर आई थिंक मैं मतलब उसको बुरा नहीं बोलूंगा आई थिंक शायद सेटलिंग डाउन होने में उसको ज्यादा टाइम लग रहा है बट आई थिंक ही शो सम ग्लिम्स तो Yeah, I think just have to see some more from him. Yeah, Connor Shields. कौन सिल्ड आई थिंक उससे मैं मतलब जॉर्डन मरे से इंटरेस्ट ये लुक्स अच्छा दिख रहा है वो आई थिंक जिस तरह से अभी चेन्नई एफसी के लिए खेल रहा है इज लुकिंग Yeah, गुड I like Joe उसके अलावा Knowles आई थिंक from Hyderabad. I I think it's a struggling side, and he's not. Yeah, but I like whatever I'm seeing from Victor Rodriguez is of course brilliant. I think he's class on his day. ब्रिलियंट है क्लास Yeah. So Noah's of course another class act. So we've got some good. एक्टर would say yes Yeah. एक्टर would say it's a good signing We've got some class players. We've also got some not great. Yeah, Northeast centre back Zabako. I think he's Sheldon's referring to. यस यस चोवेको एंड आई थिंक दूसरा वो जो आई थिंक वो कौन सा है ईरानियन या फिर कौन सा वो है He's Moroccan, I think. I forgot. मोरक्कन यस I can't remember his ग्रिफिथ्स name. ग्रिफिथ्स तो भाई पहले से ही है दिग्विजय साल के भाई इज गुड Yeah. लूना इज गुड आल्सो विल्मा जॉर्डन इज गुड यस दोस आर Yeah. द गुड प्लेयर्स couple of True. I think 70% foreigners are good I think that those 30% Yasser Ahmed yes Digvijay Salke bhai yes Yeah, exactly Yasser Yasser Ahmed Ahmed. Palestine. Yes, 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 yes. Palestine Bemomer is also good yes uh, I, I think the signings in the last this summer have not been. See, all these guys who you're talking about, Luna, Jahu, and all have been there for a while, right? Like file हाँ the new crop, I haven't been. At least the ones that I've seen BFC, even the English strikers especially have been dreadful. poor Mhm. Yeah, so yeah, it's going to be interesting to see what happens. Hiren, of course, ISL game tomorrow as well. Northeast Mohan Bagan. Where do you see this one going? And guys, please I let us think know the your predictions in the chat as well. Yeah. उसके पहले एसकेएन भाई पे अंडर 17 यूथ लीग का कोई ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है सो डेफिनेटली Okay. इंटरेस्टिंग मैच नॉर्थ ईस्ट वर्सेस मोहन बगान सुपर जायंट बिग बूस्ट फॉर मोहन बगान इज Petratos availability he's been fit so he will be available tomorrow that's a big sign big boost in the front line I would say after those you can say a long list of injuries of players and I think जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस आई है लास्ट मैच में आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ लर्निंग लेसन्स इन दिस लास्ट कपल ऑफ वीक्स particularly last 15 days after that AFC Cup exit so I think a big match for John Fernando's future also because these 2-3 matches before the SL Cup break I think will decide John Fernando's future he will continue at Mohun Bagan or not and I think they have a chance to go you can say कि for the टेबल टॉप ऑल्सो आई थिंक जिस तरह से उनका मैचेस कम खेले सो दे नीड देयर दिस विन नॉर्थ ईस्ट के लिए भी आई थिंक जिस तरह से शुरुआत की थी उसके बाद थोड़ा सा परफॉर्मेंस में डीप आया है एंड आई थिंक पार्थिव गोगोई के रिगार्डिंग भी थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन बना हुआ है कि व्हाई इज नॉट प्लेइंग इज ही इंजर्ड और थोड़ा सा क्या मतलब बेंच पे भी नहीं दिख रहे हैं सो उसके रिगार्डिंग क्लियरिटी नहीं है सो आई थिंक दे नीड्स टू क्या बोलते कि वो जो परफॉर्मेंस है उसको वापस लानी पड़ेगी जिस तरह से सीजन की शुरुआत की थी सो Yeah. interesting match होगा I think it will be a interesting match but I am seeing the Mohun Bagan you can say key favorites for this match Okay, interesting. A lot of people predicting draws. Harry Maguire, Sharon's predicted a draw. Rachit is predicted a draw. So few draws. Lone Good going for a Mohun Bagan win. Hybrid going for a 3-1 Mohun Bagan win. So I would Ritvik like to Das see a is draw. injured भाई ऋत्विक दास इज इंजर्ड भाई पार्थिव इंजर्ड है ओके ऋत्विक दास तो इंजर्ड है भाई आपको दो ड्रॉ देखना है भाई Yeah,
Hopefully, let's see. I want ओके, to see a nice पोएटिक draw. स्केल्स भाई बोल रहे, नहीं वन सेकंड, पोएटिक Yeah. स्केल्स भाई बोल रहे, हेलो हेलो सारांश भाई, कैसे हो मेरे भाई? हेलो हेलो, मतलब उससे आपका ही फायदा है, आई अंडरस्टैंड व्हाई डू यू वांट टू सी अ ड्रॉ. No, no, I want to see a Northeast loss, like from that point of view. But ओके draw for the football, like neutral, I want to see a draw. Because I ओके. think Northeast at home, I want them to sort of give in a good performance in front of the home crowd and get a draw at least from this. Yeah, 4-0 Mon Magan win. Sui says. So yeah, going to be interesting. 1-all draw mindset. So a lot of draws being predicted. It's going to be interesting to see what we do tomorrow and how this goes. Egos match 1-0 any UFC win. Interesting, and one sack. You think he'll get sacked if they lose one game? आई थिंक नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन, बट आई थिंक अब तो दो ही तीन ही मैच खेलने हैं, सो व्हाई वुड टू सेक हिम राइट नाउ? आई थिंक दो तीन मैच है. विच इज योर फेवरेट Absolutely. टीम राहुल अनेरी भाई? मैं भाई राहुल की तो बेंगलुरु एफसी है, मेरी नहीं है भाई. मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे भी स्टेट से कोई टीम आ जाए, जैसे राहुल की बेंगलुरु एफसी है. मैं भी वेट कर रहा हूँ कि गुजरात से भाई कोई क्लब आ जाए तो उसको सपोर्ट करेंगे. Yeah, I think that local connect is very important. It's हाँ hard to. इपड़ वो आता है, हाँ एग्जैक्टली. Yeah. Yeah. I हाउ इज mean. वी बीन? अच्छा भाई, Yeah. do you see him in next year in Indian national team? I think consistency with all these youngsters. I think one more season of consistent performances and then you break in. It'll not. It's not only good for them because they have to play 2 years consistently and they're used to it, but it's just more convincing when you come to the national level because you'll be playing tougher sides when you play tougher countries and it'll help them. So hopefully, yeah, and for Vibin, that's how his progression arc should be. ओके, पोएटिक स्केल्स बोल रहे कि आई प्रिपेयर समथिंग फॉर आईएसएल एनालिटिक्स. बिल्कुल बिल्कुल सारांश भाई, मैं आपसे बैक स्टेज बात करता हूँ. डेफिनेटली हम नेक्स्ट एक दो दिन में करते हैं भाई वीडियो, श्योर श्योर. Fair enough. Fair enough. Hiren, want to support a team from Punjab? गुजरात के बाजू ही तो है पंजाब. कहाँ बाजू में है भाई पंजाब? पंजाब बीच में एक बड़ा सा स्टेट आता है राजस्थान, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है. तो दो तीन आपके क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट के तीन चार स्टेट समझ आए, इतना बड़ा स्टेट है भाई वो. तो पंजाब तो दूर है भाई, उससे तो नजदीक मुंबई है भाई, इसीलिए मेरे को मुंबई को थोड़ा सा में रहता है मेरा कि मुंबई का. बट मैं वाई आई एम मतलब थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ, मेरे को गेम प्ले मुंबई का अच्छा लगता है, मुंबई एफसी गोवा Fair का. enough. आई थिंक आई लाइक टू, मतलब वो एक बार्सिलोना की मैं मैच देखता हूँ, यू नो अंडरस्टैंड राहुल, आर्सेनल्स. तो आई थिंक वो वाली चीज रहती है कि जो आप यूरोप में जो क्लब को सपोर्ट कर रहे हो, उसी की तरह का जो गेम प्ले है उस तरह की है, वो फुटबॉल आपको ज्यादा पसंद आती है rather Exactly. than समथिंग एल्स. सो इसीलिए मेरे को मुंबई सिटी और एफसी गोवा का थोड़ा सा मजा आता है देखने में. Hi, Rachit Singh, I'm from Bangalore, but right now they are not performing well, so sadly. But I think for me, I grew up watching times when BFC were extremely successful. So yeah, need a comeback, man. Let's hope that we can give that. I mean, at least I can get that. He says, I love Mumbai City FC. Come on, bro. From Bangalore. Let's support the club. But fair enough. I mean, Mumbai is a Uh, beautiful sight to watch. It's not even funny. So yeah. Yep, fair enough, Hiren. So guys, this was pretty much it. We sort of ran through Punjab versus Kerala, Zaragoza's appointment. Tomorrow is another ISL game. Northeast Mohun Bagan will be back to discuss that. Please like and share these videos. Subscribe to the channels Sports Kabri and Curious Harry. Arun Food, Indian Food and Football as well. Nava and Shaina not here today, but yeah, please check out their content. We'll be back tomorrow. Good night, everyone. See you then. गुड नाइट, गुड नाइट गाइस.